Good morning, students. Welcome back. जो फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में. गुड मॉर्निंग केशव. टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं. शार्दुल गुड मॉर्निंग. इसमें सम ऑफ टू फंक्शंस, difference of two functions, product of functions. Aditya good morning. Shreyash good morning. Product of functions, quotient function. इसमें लास्ट में हमने देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन. चंद्रशेखर गुड मॉर्निंग. स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन. Now we discuss about the composite function. Next function is composite function. Composite function. Suppose let f is the function from a to b and g is the function from b to c. F is the function from a to b and g is the function from b to c. B two functions. Then the function g of f to c then the function g of f from a to c defined by g of f x equals to g of f of x. X equals to g of f of x for all x belongs to a. For all x belongs to a is called composite of the two functions. Is called give me the. Then the is called the composite of the two functions. Composite of the two functions f and g. F is the function from a to b and g is the function from b to c. B two functions. Then the function g of
g of f of x from A to C, defined by g of x. We define this function as g of f. We read it as g of f, x equal to g of f of x for all x belongs to A. It's called composite of two functions f and t. Now diagrammatic representation. Diagrammatically, a function f, that is f of x g of x. This is the diagrammatic representation of composite function. Thus, the image of every x belongs to A under the function is the g image of f image of x. Thus, the image of every x belongs to A under the function g of f is चांगलं पाणी खाली येतं घेऊन येतं. Fundamentals of mathematics. Basics and fundamentals of mathematics. Thus, the image of every x of f is the z image of x. Note that g of f is defined only if for all x f of is called the composite of two functions f and g. This is about the composite function. Composite function क्या कहते हैं? Function है sin और दूसरा function है e raised to power x. These are two separate functions, and composition of these two functions sin e raised to power x. समझ रहे? This is the composite function.
x square is one function, tan x is another function. दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन होगा tan x square. तो कंपोजिशन इस फंक्शन को properties of composite functions. Properties of composite function. Number one, the composite of two bijection is a bijection. The composite of functions is associative. Composite of a function is not commutative. These are the properties. We discuss about the properties of function. First property क्या है देखो the composite of two bijection is a bijection. Means if f and g are two bijections, such that g of s is defined then g of f is also a bijection. Composite of a function is associative. For example, bijection means क्या है जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है 1 1 एंड ऑन टू 1 1 किसे कहते हैं एक ही एलिमेंट से ज्वाइन होना चाहिए उसको कहते हैं 1 1 ऑन टू सेट ए में डोमेन में ऐसा कोई एक वन एलिमेंट चाहिए जिसके कोई भी इमेज नहीं है बी में दैट इज ऑन टू 1 1 ऑन टू फंक्शन जो फंक्शन 1 1 होता है उसे सर्जेक्टिव कहते हैं ऑन टू होता है उसे इंजेक्टिव कहते हैं और 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव कहते हैं if f g h थ्री फंक्शन है f है g है h है are three functions such that f of g of h and f of g of h are defined then f of g of h is equals to f of g of h. This is associative. बाइजेक्शन ओके मैं बाइजेक्शन का डेफिनेशन आपको बताता हूं जो फंक्शन 1 1 है बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स
इसमें ये 1 1 है क्योंकि 1 एलिमेंट इज एसोसिएट टू 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट, इसको बोलते हैं 1 1। और ऑन टू मीन्स ये 4 की इमेज नहीं है कोई भी, ये जो एलिमेंट है 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 4 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए उसको हम ऑन टू कहते हैं। और जो 1 1 ऑन टू है इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। जो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, दैट फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सर डायरेक्शन चेंज हो गई स्क्रीन की, ओके, स्क्रीन की डायरेक्शन चेंज हो गई सर, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो गया मोबाइल। अभी अब ठीक हो गया। ये कंपोजिट फंक्शन है ना, कम्यूटेटिव नहीं है। कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मीन्स f of g is not equals to g of f. Now next है इनवर्स फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनवर्स फंक्शन की। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन लेट ये फ्रॉम ए टू बी फंक्शन है। फंक्शन f from a to b is 1 1 and on 2 is 1 1 and on 2 let f from a to b is 1 1 and on 2
function है 1 1 and on 2, then there exists a unique function g from b to a, and there exists a unique function g from b to a such that f of x y x equals to y implies g of y equals to x. अगर f of x equals to y है तो g of y is x होना चाहिए. Then g is said to be inverse of f. Then g is said to be inverse of f. G equals to from B such that f of x comma x and x comma f of x. थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है स्टूडेंट से कंसेप्ट क्लियर होना तो अच्छा रहेगा. इतना ही ध्यान में रखो, f of x equals to y है तो g equals to f of y. इसीलिए और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, ग्राफ. फंक्शन का ग्राफ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है बाइनरी ऑपरेशन. इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट है. नेक्स्ट कंसेप्ट है बाइनरी ऑपरेशन.
उसमें है फर्स्ट अनअरी ऑपरेशन। Unary operation. A function f from a to a function f from a to a is called an unary operation in a. Is called a unary operations in a, that is f is the function from a comma f of a such that a comma f of a belongs to capital A. A function f from a to a is called as unary operations in a. Next, a binary operation. Next definition. Binary operations. A function g from a cross a to a function g from a cross a to a is called binary operation in a is called binary operation in a is called binary operation in a, that is G is the set of all ordered pair AB G of a comma B such that a comma B belongs to capital A cross A and G of a comma B belongs to